Our second story tonight is one of great human interest because of how heartbreaking it is. In a horrifying incident at a high-rise society in Noida, Sector 137, a 73-year-old woman died after the lift that she was in collapsed midway. Now, she'd gotten onto the elevator from the 8th floor, but the wire of the elevator snapped, leading to a free fall between floors that may have caused the woman cardiac arrest. Now, just a few hours after, hundreds of residents of the Paras Tierea society where this happened came out in the society's complex to protest this incident and the upkeep of common services like the management of lifts. But this is actually not the first time. Back in 2016 too, the society members had protested against what they call the poor quality of the builder's construction. Recently, we've seen several stories related to the lack of safety measures housing societies have in place across the country for their residents. Today on Plain Speak, we want to have a slightly different discussion where we hear from you, our audiences, about your urban residential trials, your woes. We also want to understand what you think can be done to make our houses homes. First, let's take a look at what happened at Paras Tierea. A 73-year-old elderly woman took a lift. She took it from the 8th floor. She was living in that apartment with her son and her daughter-in-law. Now, the lift suddenly collapsed midway, but it didn't actually touch the ground. This happened at 4:15 p.m. The elevator basically moved between floors. She was inside it. The victim was rescued after 45 minutes. She was rushed to a nearby hospital, but she was declared dead on arrival by the doctors. Now, it's yet to be seen if she died due to cardiac arrest or due to injuries she suffered, possibly on her head. Several questions arise here. Number one, why did it take 45 minutes to rescue the woman in the first place? Number two, did potential negligence and lapses either in the original construction, the construction of the elevator, the procurement of the elevator and the placement inside the building, or the maintenance? Was that the issue? Why weren't regular maintenance checks conducted? We know that they weren't being conducted the way they should be. And how did an earlier lift mishap that actually took place just a few days before that, where luckily there wasn't anyone in the elevator, how did that go unchecked? Are lifts in high-rise buildings themselves becoming death traps because of poor maintenance? Does more need to be done? That's what we want to discuss with you, particularly those of you that live in residential societies across the country. We're focusing today on this 76-year-old woman's life and story. Was this accident that she suffered, was it an accident in the first place, or was it actually sheer negligence from authorities? And how do we make high-rise buildings safer? These are the two questions we're taking a look at today on Plain Speak. The doors completely get locked, and many times people here complain about the free fall. 30th June the contract got over, so there was no maintenance. Okay. We are asking you to call in and tell us your thoughts, your plight, the problems that you face living in high-rise buildings in different metropolitan cities across the country. How do we make high-rise buildings and high-rise communities safer? What can we do to improve the experience? Call us on 0120-434-1895. 0120-434-1895. All right, we have two guests with us right now. First to shed light on this story, we have Binay Kumar Singh. He's actually a resident of the tower complex where this took place, Paras Tierea. Binay Kumar Singh, thank you for joining us, sir. Thank you for taking out the time. We also have Ravi Sinha. He's a real estate expert. We'll come over to him for his expertise on the ways in which complexes are managed across the country. Binay, I'm actually coming over to you first, because I first want to ask you about how you heard about this incident when it took place. Then tell us a little bit more about the experience of living in the society, because we've heard complaints from residents over the day today. I want to know what your experience has been, sir. Yesterday, what was happening is very disheartening.
और ये RWA का कहना है कि बिल्डर ने जो मेंटेनेंस करा था या मेंटेनेंस कर रहे थे वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे। हाँ। बट मेरा कहना ये भी है कि RWA ने जब हैंड ओवर लिया तो उन्होंने हैंड ओवर लेने में बहुत जल्दीबाजी कर दी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर उन्होंने प्रॉपर तरीके से हैंड ओवर लिया होता तो शायद ये मिस हैपनिंग नहीं हुई होती। बिल्डर ने जो करना था वो तो करके निकल गया, बट RWA ने भी अपना पूरा काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये मिस हैपनिंग हुई। सर, आप जब कह रहे हैं कि RWA ने पूरा काम नहीं किया, आप उसके बारे में और बता सकते हैं हमें? मैम, हैंड ओवर लेने में उन्होंने बहुत ज्यादा जल्दीबाजी कर दी। उन्होंने हैंड ओवर विद इन अ मंथ, इतनी बड़ी सोसाइटी जहां 4,000 फ्लैट्स है, उसके हैंड ओवर लेने में विद इन अ मंथ इतने बड़े सोसाइटी का उन्होंने हैंड ओवर ले लिया। तो बेसिक चीजें जो उनको जाननी थी, समझनी थी, मे बी उन्होंने बिल्डर से समझा नहीं, या कहीं ना कहीं वो रह गया, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। ओके सर, आप बिल्डर के साथ नहीं, सॉरी, आगे बढ़िए सर, क्या कह रहे थे आप? नॉट गेटिंग योर वॉइस। ऑलराइट, आर यू एबल टू हियर मी सर? सॉरी, Binay Kumar sir, are you able to hear me? Yeah. All right. Can I come to you with follow-up questions, sir? Can you tell me a little bit more about उस सोसाइटी में जहाँ पे आप रहते हैं, उसके बारे में आप हमें और बता सकते हैं? RWA के बारे में और बता सकते हैं? कोई ऐप है जिससे आप कोऑर्डिनेट करते हैं RWA के साथ? RWA कितना बड़ा है, हमें और बता सकते हैं सर? मैम, जब बिल्डर, अब आई थिंक मई में इन्होंने बिल्डर से हैंड ओवर लिया था। जब तक बिल्डर के पास था तो हमारे पास यहाँ पे माई गेट के थ्रू या फिर हम ऑफिस डेस्क पे जाके अपने सारी चीजें जो भी कंप्लेन होती थी वो रेज करते थे। बट अभी हम जो कंप्लेन रेज करते हैं वो माई गेट पे ही करते हैं, और डेस्क पे या किससे बात करनी है, एस्केलेट किससे करना है, ये हमें अभी पता नहीं होता है। हम सिर्फ ऐप पे अपना रेस करते हैं, उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें नहीं पता इसके बारे में। उसको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, नो आइडिया। ओके सर, आप हमें बता सकते हैं, कहा जा रहा है कि एक और ऐसा हादसा हुआ था कुछ ही दिन पहले जिसमें एलिवेटर गिरा था, तब एलिवेटर के अंदर कोई था नहीं। उस हादसे के बारे में आप कुछ जानते हैं सर? मैम, यहाँ पे अक्सर ही ऐसा कुछ होते रहता है। आप आए दिन किसी भी आप टावर में चले जाइए, अमूमन आपको हर दूसरे दिन किसी ना किसी टावर में आपको लिफ्ट बंद मिलेंगी। रीजन नहीं पता होता है, एक्चुअल रीजन ये बताते भी नहीं है क्यों बंद है लिफ्ट, बट आपको हर टावर में ऐसे घटनाएं मिल जाएंगी। ओके सर, आपसे ये भी पूछना है, RWA के बारे में आपने बात किया था, जो आपके कॉम्प्लेक्स का RWA है सर, वो इलेक्ट किया जाता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है, और जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में आप कुछ जानते हैं सर? मैम, एक्चुअली ये तो RWA फॉर्म हो गया, किसने फॉर्म किया, इन्हें किसने इलेक्ट किया, मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पे रेसिडेंट है उनको नहीं पता है। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता। आपने कहा था सर कि 4,000 लोग रहते हैं, क्या आपको पता है RWA का साइज कितना है, कितने लोग हैं जो मेंटेन करते हैं? नहीं मैम, कुछ बता दो रहा हूँ, RWA के बारे में कुछ नहीं पता है। गिने चुने एक आध लोगों का नाम पता है, वो भी पूरे नाम नहीं पता है। और 4,000 तो मैम हाउस है, लोग कितने रहते हैं पता नहीं। 4,000 तो फ्लैट्स है। ओके सर, एक और प्रश्न आपसे पूछना है, कल के हादसे के बारे में आप हमें और बता सकते हैं? रेजिडेंट्स का रिएक्शन क्या था, आपके नेबर्स का क्या रिएक्शन था सर इस पे? मैम, कल शाम को जब मैं ऑफिस से वापस आया, अमून 7:15 बज रहे थे। 7:15 बजे का जब मैं गेट से एंटर लिया तो काफी भीड़ लगी हुई थी। तब मुझे पता चला कि टावर 24 में एक लिफ्ट के वायर टूटने की वजह से एक लेडी की डेथ हो गई है। फिर वहां पे पुलिस आई हुई थी, लोगों में काफी गुस्सा था, बट उसके बाद पुलिस प्रेसिडेंट जो कर्नल गौतम है उनको ले जाने की कोशिश कर रही थी। लोगों ने काफी रोका, रिजाइन मांग रहे थे। उसके बाद मैं वहां पे, और क्या हुआ उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। ओके, बट सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि कल और आज के बीच में RWA की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है इस इंसिडेंट के बारे में? मैम, एक नोटिफिकेशन क्या बोलोगे आप, एक सॉरी मैसेज आया है इनका ईमेल पे, बस इसके अलावा और ऐसा कुछ नहीं आया। उसके बारे में सर हमें और बताइए। सॉरी, उस नोटिफिकेशन के बारे में हमें और बताइए, उनका क्या कहना था सर RWA का? उनका कहना था कि उन्होंने मेंटेनेंस किसी को दे रखा था, और मेंटेनेंस से वो बात कर रहे हैं। उन्होंने FIR जो है जिसको ARC दे रखा था, जो मेंटेनेंस का वो दे रखा है ईयरली मेंटेनेंस का, उसके ऊपर FIR करा है और उसे पुलिस ने तलब किया है। अब उसके आगे बहुत जानकारी नहीं है मुझे।